सिविल कंस्ट्रक्शन का काम हमारे करने की पद्धति पे डिपेंड करता है। पहले हम कुछ इस तरह से काम करते थे, जहाँ से हमें काम करने की ज़रूरत हो वहाँ से हम काम शुरू करते थे। बहुत सारा काम अनसेफ कंडीशन में होता था। आज दुनिया बदल रही है, सुरक्षा की ओर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है और हमें हर काम सुरक्षा के अंदर ही करना चाहिए। गलत गलत ही होता है, चाहे उसे हर कोई करे। सही सही होता है, चाहे उसे कोई एक करे। साइट क्लीनिंग का बजट में प्रोविज़न होना चाहिए। निकला हुआ हर डिसमेंटलिंग मटेरियल प्रॉपर तरीके से डिस्पोज होना चाहिए। साइट फेंसिंग सेफ्टी में सबसे पहला सेफ्टी मेजर है। इससे मटेरियल की और हमारे काम करने वाले साथियों की सुरक्षा होती है। एक्सेप्टिंग फाउंडेशन। एक्सेप्टिंग फाउंडेशन दो टाइप के होते हैं। एक शैलो एक्सेप्शन होता है जो 3 मीटर डेप्थ का होता है, और डीप एक्सेप्शन होता है वो मोर देन 3 मीटर का होता है। Excavation Foundation. Shallow excavation. IS code number 3764 1992. Indian Standard. Excavation Work Code of Safety. Depth of excavation more than 1.5 is risk required proper safety. Before excavation, site engineer has to ensure any pipeline, sewer, gas line, electrical conduit in the earth. Scaffolds and ladders to be provided for workers inside the trench. No excavation or earthwork below the level of any foundation of building or structure shall be committed in continued unless steps are taken to the prevent dangers to any employed person from collapse of the structures or fall of any part of their. No materials or load shall be placed or stacked or removed near the edge of the any excavation. Excavated material is not to be placed near than 1 meter other edge of the excavation, but shall be placed anywhere within 50 meters. See the image. The bottom of foundation's pit shall be dressed level in all directions. The foundation trenches shall be dug out to the exact width of the lowest steps, putting the depth of shall be accordance with the plans as may be otherwise ordered by engineers. Excavation area shall be adequately lighted for night work. Warning lights shall be placed in proper sites. Ensure the safety precautions. Every part of trench likely to be frequented by the public, such as trenches and barricades, as well as prevent the persons mentioned in place at all times. Common hazard in excavation: quicksand, water content or degree saturation, effect of freezing and thawing, vibration from near sources, adjacent loose piles, surcharge imposed by adjacent structures. In form of soil, the side of the trench shall be kept vertical up to a depth of 2 meters from the bottom, and for a greater depth in trench shall be by allowing steps of 50 centimeters on either side every 2 meter depth from bottom, so as to give vertical side slope 1 by d to 1. See the image. For excavation in loose soil, IS code number 3764 1966 shall be followed. Where different foundations level are necessary, IS code
1904 to 1966 may be followed. If by the contractor mistakes the excavation is made deeper and wider than shown on the plan, the extra width depth shall be made up to concrete or not earth or other materials at the cost of the contractor. Deep excavation using contiguous piles. In urban scenario, multiple malls required huge parking space. Metro station below ground level required deep excavation up to 20 meters. In such a type of excavation, retaining soil is a very big challenges. Contiguous pile are the proven solution with the same limitations. See the image. Excavation of insertion of planking and shuttering. Unless otherwise specified, remove the slip and falling excavation. Bailing out of water and excavation from rains, subsoil water. Shifting and supporting pipe, electric cables, mid direction. हम हमारे फैमिली से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और हमेशा करते रहेंगे, क्योंकि हम हमेशा सेफ्टी में ही काम करते हैं। धन्यवाद। आपका दोस्त हारून।